as professor. So वो associate वाला हटाना था. Thank you so much. Congratulations, ma'am. Thank you. Indeed, a privilege to be a speaker amongst the galaxy of starboards. We can see Raj sir also, Jawar sir also. And yes, I will start with my signature. मेरा काम बोलता है, मेरा नाम बोलता है. मेरा काम बोलता है, मेरा नाम बोलता है. मगर देखूं जरा कि जब घर जाऊं तो दरवाजा कौन खोलता है. खूब जमकर मैं कमाऊं, गेस्ट को भी 7 स्टार में खिलाऊं. सोशल मीडिया पर तो बस मैं छा जाऊं, मगर देखूं तो जरा कि जब घर जाऊं तो कानों में रस कौन घोलता है. So with this, I would like to start that we need to have a balance. बड़ी मुश्किल है, but I always believe नामुमकिन नहीं. So first and foremost, is there any need? Yes, because burnout is a real thing. I will not bore anyone कि इतना % risk of stroke बढ़ जाता है, stress बढ़ जाता है, anxiety बढ़ जाता है. But yes, we need to identify कि even if a single person from the fraternity is suffering from this burnout, then we are failing as society to help him or her out. If I talk about gender, then also I will be wrong if I say कि सिर्फ females ज़्यादा affected हैं, because that is a common belief, that is the common perceptions. Males are also equally affected and we need to identify. But as an obstetrician in this fraternities webinar, when we are sitting, we all know that majority of the obstetricians are female, acknowledging the fact that we have wonderful male gynecologists too. And yes, these obstetricians, especially when married, having kids, they have to face workplace politics, equations, instructions, and balance their achievements also. It becomes quite tricky. Because हमें सबको पता है, we want to look beautiful, we want to have hot bodies, we want to have this kind of lovely looking happy family, we want to have queues of patients waiting in our clinic. कौन है monkey? This pile of money. Jumping bird है क्या? I would love to have this, but in getting all these achievements, the balance is very thin, and that's the art we are going to learn today. कूदने वाला? Because when we are not able to balance, घर जाके या तो हम ऐसे हो जाते हैं या वर्क प्लेस पे हमारी शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है. और अगर हम ऐसे बनते नहीं है तो कोई ना कोई बेलन लेके हमारा हाथ में स्वागत करने के लिए तैयार ही होता है, क्योंकि हम उनको एडिक्वेट टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं. Along with that, let's acknowledge this another fact that being surgeons, obstetricians, we are dealing with 2 lives. It is well acclaimed fact that we are having maximum gray matter, but we are having maximum degeneration of the neurons also. So the resultant is something like this: burnout syndrome, burnout phenomena, whatever you would like to say. So कुछ तो करना पड़ेगा, because I believe कि when I was going for counseling, somebody could have told me कि ये obstetrician की life कैसी होती है, क्या होता है, तो maybe मैं rethink नहीं करती, क्योंकि ये मेरा passion था, but मैं better prepared होती. But as I always believe, no stage is late stage for helping ourselves and for helping others too. I took a workshop. I was associated with company, and the founder was highly, and he was explicitly a believer of the fact that workplace is the place which makes a person, affects achievements, family, and everything. So we conducted this workshop, which was 8 hours, and so many activities were conducted in them, and it was very well accepted कि हाँ हम workplace पे परेशान रहते हैं. So how to do it? I sincerely request everyone to have a pen and paper. It will just take 30 seconds. एक activity कर लेते हैं. Enlist 5 priorities in your life. X, Y, Z, A, B, कुछ भी हो सकता है. फैमिली, कार खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, इन्वेस्टमेंट खरीदना, सोना आज पूरे दिन, कोई भी प्रायोरिटी, राइट? उसके साथ एक सर्कल बनाइए. उस सर्कल को कंसिडर कीजिए कि वो 24 घंटे हैं. डिवाइस दीज प्रायोरिटीज जो भी आपने बनाई हैं इस सर्कल में 24 घंटे के हिसाब से कि आप उस प्रायोरिटी को कितना टाइम देते हैं. सो आई विल वेट फॉर 5 seconds so that everyone, at least in our mind, does this. सो सर्कल कुछ ऐसा होगा, किसी की प्रायोरिटी ये ज्यादा होगी, किसी की ये ज्यादा होगी, और हमने टाइम भी बना दिया होगा. बट असेस कीजिए, आर यू गिविंग इनफ टाइम टू योर प्रायोरिटीज in the list of order? Because majority of the times it is seen that the least priority in our life which we have, we are giving maximum time. If not maximum time, then the time which is required, which we need to distribute to the first priority, is given to the topic or activity which is having minimum priority in our lives. So we need to see and introspect what is wrong. Either there is wrong prioritization
और देयर इज रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई। ये दूसरी एक्टिविटी है। आप अपने वर्क प्लेस पर जाने से पहले एक इमोजी जरूर आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी इन इमोजीज में शक्ल इस टाइम कैसी बनी हुई है। जब आप वापस आते हैं तब भी आप अपनी इमोजी आइडेंटिफाई कीजिए कि आप वापस आते हुए आपकी शक्ल कैसी बनी है। Pay attention to these emojis or emoticons. Ask yourself, do I feel energized, fulfilled, satisfied, or do I feel angry, resentful, sad जाते वक्त या आते वक्त? Is the net resultant जाने में और आने में a negative one? क्योंकि जाने में अगर नेगेटिव है यानी आपका वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम है, और आने में नेगेटिव है यानी आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम है। सो अटेंशन, यहाँ पे आपको रुकने की जरूरत है। Pause. Take a step back and ask yourself, what is currently causing me this stress, feeling of being imbalanced or dissatisfaction? How are these circumstances affecting how I perform and engage with my job or work? How are they impacting my personal life? What am I prioritizing? What am I sacrificing? This should be your question. And in that, what is getting lost, right? Reprioritize, क्योंकि ये प्रायोरिटीज तो मौसम से भी ज्यादा जल्दी बदलती हैं, सो यू कैन ऑलवेज डू दैट। आस्क योरसेल्फ कि अगर मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कितने दिन तक कर सकती हूँ। सी इफ यू से कि आज तो मैं रात भर जाग लूंगी, बट क्या आप रोज रोज रात भर जाग पाएंगे? आस्क योरसेल्फ दैट। सेकेंड इज, ये जो प्रायोरिटाइजिंग वर्क ओवर फैमिली मैं कर रही हूँ, क्या ये मेरी जरूरत है? आपका आंसर अगर आएगा यस, इज इट रियली नेसेसरी, तो आपका आंसर आ सकता है यस। इज इट रियली इनएविटेबल? आई एम श्योर आपका आंसर नहीं आएगा, राइट? सो दिस इज वेयर हियर यू हैव टू स्टेप इन, because this will bring in a lot of regrets, and we as human beings already have lots of regrets and guilt feeling. Let's not fall into this trap of this regret, stress, anxiety and depression cycle. Come out of that. Why and how we can always implement changes to change this. You recognize your priorities, consider the option that could help you improve, and take action. What kind of action? One, public change. Something that explicitly shifts your workplace expectations. I'll explain it later. And a private change in which you informally change work patterns without necessarily attempting to change your workplace expectation. तो दोनों को अलग कर दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज किया है। पब्लिक चेंजेस क्या है? डेप्यूट एंड डेलीगेट। क्यों? क्योंकि आप इररिप्लेसेबल नहीं हैं। आज आप हैं, कल कोई और है, तो इसलिए अपना काम बांटिए, चिल कीजिए और उनको एसेस कीजिए। सेकंड, कभी खुश मत होइए सुन के कि ही इज वर्कaholic, he does his work continuously, you are a believer कि only I can do this, सिर्फ ये काम मैं ही कर पाती हूँ, मैं स्टाफ पे छोड़ देती हूँ तो ऐसा करती है। And never ever think कि only I can do this perfectly. Perfection is nothing. This is just a misnomer in our head. कुछ भी perfect नहीं होता। भगवान की बनाई हुई चीजें परफेक्ट नहीं होती है उस सेंस में, किसी में कुछ होता है किसी में, तो हम क्या चीज है। सो ऑलवेज रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट। प्राइवेट चेंजेस क्या आ सकते हैं? यू सेट योर बाउंड्रीज, राइट? और बाउंड्रीज कभी भी एक दिन में सेट नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से मैं अपने वर्क प्लेस टाइम कम कर देता हूँ या कम कर देती हूँ, आज आप 11 बजे तक ओपीडी देख रहे हो, कल 6 बजे ही भाग जाएंगे, इट कैन नॉट हैपन। सो ब्रिंग इन ग्रेजुअल चेंजेस, do lot of time management. There are a lot of apps that are helping you in this. Avoid procrastination. ये सबसे मेजर किलर है। आज नहीं कल कर लेंगे, ऑल्दो हम सब करते हैं, बट कम कीजिए। बी वेरी फ्लेक्सिबल ऑल्सो, कि अगर आज किया है तो ओके मैं कल कर लूंगा, जरूरी नहीं कि आज मैं अपनी पूरी बॉडी को थका के ये काम पूरा करूं। बिकॉज यू हैव टू रेस्पेक्ट योर बॉडी, गिव रेस्ट टू इट, एंड ऑलवेज लिसन टू योर माइंड। Never ever do constant overwork and neglect personal life. Lot of things are written in this slide. I will deliberately skip it because I want you to try. One, daily to-do list. फल खरीद के लाना है, आज बच्चे को स्कूल से उठाना है, उसको कोर्स की बुक खरीदनी है, and so many things. So daily to-do list, वो उस कैलेंडर पे जो आपको MRs देके जाते हैं उस पे छाप दीजिए। सेकेंड इज मेक अ वीकली कैलेंडर। इस वीक मुझे अपने फाइनेंसेस सेट करने हैं या मुझे बैंक से मीटिंग करनी है, और वट एवर बी योर प्रायोरिटी, सेट इट देयर। मेक अ मंथली चार्ट। इस मंथ में मुझे एक ट्रैवल मीटिंग करनी है, 4 वेबिनार करने हैं, सेट इट ऑन द कैलेंडर। ईयरली माइलस्टोन्स, जैसे डॉक्टर पूजा की बुक्स निकल रही हैं, तो मुझे इस एक साल में 2 बुक्स निकाल ली है। मोनिशा को इतने अवार्ड्स मिलते हैं, मोनिशा ने सोच लिया कि इस साल में मुझे 4 अवार्ड्स लेने। सो सेट योर माइलस्टोन, और वो कैलेंडर पे छप के ना, यकीन मानिए आपके दिमाग से बर्डन कम हो जाता है। Block distractors. This is very important. Persons can be your major distractors. Things,
गैजेट्स, अगर गैजेट यूज ही करनी है तो उनको पॉजिटिव वे में यूज कीजिए, लाइक चैट जीपीटी एंड ऑल. यूज गुड एप्स और इंस्टॉल अनइंस्टॉल बेकार की एप्स. ब्लॉक योर थॉट्स ऑल्सो, बिकॉज एज आई सेड पर्सन्स कैन बी मेजर डिस्ट्रैक्टर्स, स्पेशली वर्क प्लेस पे. ये अभी एक टॉपिक आने वाला है, लव, सेक्स एंड केमिकल लोचा. बड़ा भारी पड़ता है ये, थोड़ी सी सजा, मतलब थोड़ा सा मजा और बहुत सारी सजा. सो वी कैन ऑलवेज balance our life in this aspect also, because I have been seeing lots and lots of people falling into these traps. Co-workers, they are very important in your life. They are your second family. Make your workplace a happy place for them also. अपने लिए नहीं, उनके लिए भी अच्छा कीजिए. Treat them for your good work. You've done a good surgery. Go and have good food with them. Treat them for their good work also. Invest in good staff who share responsibilities and work with you. Now I said invest, iska matlab this staff can come, you know, thoda costly also. So invest in that. It will share a lot of things, save a lot of things. Practice mindfulness about your thoughts. क्या सोच रही हूँ मैं, सही है ये सोचना. Actions. अभी मेरी किसी से लड़ाई हो गई, मैं चल पड़ी रानी की झांसी की रानी बन के, और मैं एक बार ये तो सोच लूं कि अभी मैं मोनिशा से लड़ने जा रही हूँ. आज मैंने उसे ये बोला, कल मैं उससे बात वापस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. ऑलवेज थिंक अबाउट दैट. देन ब्रीदिंग. Deep breathing practices, they identify a lot of things and bring calmness into your mind and life. Body parts. And I think I will have to request Neeraj sir and Niharika for having this mindfulness session later on, because it identifies, हमें पता भी नहीं होता हमारी कमर में दर्द हो रहा है. So you have to be mindful about your body parts also. Family, our actual responsibility, but yes, not only our responsibility. Family बहुत सारे लोगों से मिलके बनती है, so उन लोगों को सबको अपना काम करने दीजिए. Don't raise your kids with regret, guilt, compensation cycle कि कल हम देर से आए थे, बच्चों से बात नहीं कर पाई, तो आज चलो मूवी चल रहे हैं, उसके बाद फन सिटी चल रहे हैं. You are disrupting their sleep cycle as well as their study patterns also. Don't take everything all your head. घर साफ नहीं होता, नहीं रहने दीजिए. It's okay to have गंदा घर. खाना आज आपने नहीं बनाया, मेड ने खा लिया. It's okay to have मेड का खाना also. Plan your 4 Sundays and divide 3 for family, 1 for exclusively yourself. आंख बंद कर लीजिए, कौन क्या सोचता है, सेल्फिश है क्या है, कोई मतलब नहीं, बट 1 Sunday आपका है. Share everything. Gadget time also with kids, because that helps in building bonds, and we cannot just close our eyes कि हम मोबाइल यूज करना उनका बंद करा दें. It is a real thing. We have to accept and we have to modify. Remember, it's very easy to get angry, and it takes lots and lots of efforts to be happy. It's easy to break, hard to join, easy to destroy, hard to build. So place your annual health checkup. Your body, you have to build it. और एनुअल मैंडेटरी वैकेशन. तो मैंडेटरी वैकेशन और हेल्थ चेकअप आपको साल में एक बार करना है. 6 महीने में एक सोशल विजिट और एक अपने वर्क प्लेस का असेसमेंट कि मेरा हॉस्पिटल वगैरह कैसे चल रहा है वो करना है. 3 महीने में एक बार अपना पूरा बजटिंग करना है, और 3 महीने में एक फ्रेंड्स की गेट टुगेदर भी करनी है. हर 14 दिन में एक सेल्फ पैम्पर सेशन, वो मसाज हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, और एक हॉबी इंडल्जेंस. छोड़ के भाग जाइए अपना घर, एक वर्कशॉप करिए, आर्ट सीखिए, फोटोग्राफी सीखिए, भाग जाइए. देन हर हफ्ते में एक बार अपना डाइट का असेसमेंट कि इस बार मैंने फ्रूट्स लिए, खाना खाया, नारियल पानी पिया, व्हाटएवर स्टफ. और हर हफ्ते अपने हॉस्पिटल का असेसमेंट लीजिए कि मेरा स्टाफ ठीक है, आर दे हेल्दी, मेंटली साउंड. डेली जो आपको करना है वो एक्सरसाइज करनी हो, पार्टनर पैम्परिंग, यू नो, ऑलवेज रिमेंबर दैट बेलन विच कैन बिकम अ बिग हथियार. सो उनकी पैम्परिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यस, ईच सेकेंड बी ग्रेटफुल टू द गॉड. As you always know that कुछ लोगों के पास वर्क नहीं है और कुछ लोगों के पास लाइफ नहीं है. So let's be very grateful that we have both, and we're talking how to balance it. So let's learn this art and start doing that. Thank you. Wonderful Shayla. Thank you, sir. सच में मैम मजा आ गया. ये AI वाला पार्ट, आई थिंक दिस इज समथिंग एवरीबॉडी शुड गेट टू नो दिस थिंग. The artificial intelligence is there, and you know, that is there to make your PPT, that is there to make your chapters. You just need to tell them what to do it now, and no need to, you know, रात की देर तक खड़े रहना या बैठे रहना, plagiarism check करना. So chairperson, I think, yeah. Chairperson, we have a ma'am. Ma'am, are you there? Kavita ma'am, Shelly ma'am, are you there? Yes, Monisha, I'm here. Hi, Shelly ma'am. Ma'am, please give your expert opinions on this. Dr. Shayla, a wonderful presentation it was. I think I've not attended many lectures from you, but this was one of the best.
And it was so useful for everyone, this work-life balance. We all think that we know everything about this, but what your pointers and your inputs were really useful. I think I'm going to really implement them, think over whatever you have told today, and I'm sure it will be useful to all our listeners today. Thank you so much, Dr. Shaila. It was a wonderful presentation. Thank you so much, ma'am. Ma'am, सच में मजा आ गया इसको कहते हैं. I think these